then people have started moving. So be careful, be safe. That's what I would say. So hello friends. Today's topic is unlocking the potential of digital marketing in crisis time. So just to set the context before I hand over the stage to Meg, I would say digital marketing was always important. Digital marketing has taken a stage where it's an important way of promoting your brand, marketing. It has always has been important, but in this crisis time, it has taken a next step. Perhaps it's more important now to be be on a digital platform and doing the marketing. And this crisis time, since we cannot travel, mobility is limited, uh, digital marketing has become more important for us now. So that's the reason we have chosen this topic, and we have got Mr. Mayank Batra with us. So let me give a little introduction of Mr. Mayank. Mayank is a good friend, and he has 10 years of experience in digital marketing, digital media industry. He has been a speaker in very prominent, prestigious institutes like IIT Mumbai. He has catered to 400 plus brands with business solutions. He has been involved with some prestigious organizations like Google, Witty Field of Indore, FCCI, Eureka, and many more. So I think Mayank is the right person to guide us how we should take our digital marketing forward. So we have a lot of us have been on digital platforms, but how to do digital marketing, what mistakes we do, how we can make it more relevant for the client, how can we actually reach our real client. So that would be Mayank's purview. Mayank would be sharing his experience with us and guiding us through this, how we can do digital marketing in this crisis time. Apart from that, I just before handing over the stage to Mayank, I would set some ground rules. So everybody has been kept on mute for, I mean, so many people have joined, otherwise it would be a very chaos. So we have kept everybody on mute. If anybody has question, you can ask questions in a Q&A section. So the pattern of this entire webinar would be Mayank would be talking to us, sharing his views, taking through us through this presentation for around 40 odd minutes. After that, the stage would be open for a Q&A session. So you can ask your question in Q&A session, and we will try to combine common questions, and I'll ask these questions on your behalf to Mayank. Mayank can also see question answer section. He can pick up relevant questions and answer. So before, without any ado, I'll hand over the stage to Mayank. Mayank, please guide us through how to improvise our digital marketing strategy. Thank you. Thanks a lot, Ronald sir. It's been a pleasure and honor to sit beside you and empower people, more and more people all the time. I've been to Bhopal and have been through your hospitality, so that's amazing. So I would first of all, I would like to thank you, Ayush and Siddharth sir, and the entire team, Raman sir, and all the people involved in this webinar who have made this possible, because it's one of the tough to work from home and manage things and get it right at the end point. So thanks a lot for everything. Hello everyone, it's Mayank. Before starting, Ronald sir, I would request agar chat option on kar sake hum, because I'm going to ask you a question and make it interactive so that people can reply. Though I'm going to ignore a lot of Q&A at the moment because I'll be covering presentation, but I would appreciate if we can turn on the chat for everybody so that they can revert on the chat. Would that be okay? Mike, I'll check with our technical team. As of now, by default, we have kept it on disabled it. So I'll just check with my technical team. As of now, Q&A section is open. You can see the Q&A section. I mean, if anybody wants to ask any question, you can see those questions in the Q&A section. Sure. Perfect. Yeah. So hello everyone. This is Mayank. I think Ronald sir gave a brief introduction about me. So yeah, I have been on and off into traditional and digital media field for a lot of years. I have done a lot of jobs, businesses, and catered to a lot of clients. Have been associated with Google, Fiki, and a lot of big brands, edtech brands, and many more. So I'm still empowering a lot of people globally via online calls, webinars, and seminars and conferences hote rehte the lockdown ke pehle. So I used to be there.
I canceled 8 to 10 speaking sessions because of COVID and everything. But now, guys, since this lockdown has came in around us, this crisis has came around us. I have one very good question for you, Ronald sir. Can you please provide me the access to share the screen? I think you need to stop the screen share. I'll be able to share my screen. Ronald sir. Um. Okay. I think I need the screen share. Okay, Raman sir, can you help me with it? I need the screen share, please. Ronald sir, screen share, please. I can't hear you. You are on mute. Uh, yeah, I can do that now because you stopped it. Thank you. Yeah, Thank you very much. I hope my and screen we is have audible. Yeah. yeah, and sorry, we have enabled the chat section also, so people can ask you questions or chat with you in the chat section Great. also. So, Thank guys, you. if I ask you any questions, feel free to revert in the chat. Don't make the chat messy because it takes somewhat my attention there as well. But any kind of relevant questions are more than welcome so that I can attend them at the end of the session. Now, my next question is in front of you right now. I mean, it's going to be on the next slide. So, due to crisis, majority of the things are dependent on digital now. We all know that. किराना खरीदना हो या डिलीवरी करानी हो या मे बी समथिंग एल्स कम्युनिकेट करना हो इट्स एवरीथिंग न्यूज collector के through news आ रही हो everything is happening on WhatsApp and Facebook and everything, right? So here comes my mic drop statement, what I usually say in a lot of events and what I have actually proven, that digital marketing is not the future at all. Why digital marketing is not the future? Because any guesses why digital marketing is not the future? Any guesses? Okay, I'm gonna unveil that digital marketing is not at all the future because it is the present. So अब ये वो चीज नहीं रही कि आगे जाके 5 साल 10 साल के बाद करना है, ये वो चीज बन गई है, ये वो स्किल सेट बन गया है, ये वो मीडियम बन गया है जो अभी करना है। अब नहीं कि आपके ब्रांड के लिए, बिजनेस के लिए, खुद के लिए, पर्सनल ब्रांड के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, तो बाद में बहुत लेट हो जाएगी। क्योंकि 2020 मैंने 2018 में प्रेडिक्ट किया था कि 2020 तक जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं आए हैं वो ब्रिक एंड मोटार बिजनेस ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और उसका जीता जागता सबूत ये कोविड ने हमको दिखा दिया। Almost everything is available online in today's date, from smartphones to clothes to cars to bikes to everything. You can buy it online easily. You can buy laptop. You can even get married online nowadays. So I believe that digital marketing ने बहुत कुछ change कर दिया है। सिर्फ शॉपिंग बिहेवियर नहीं, हमारा सोचने का तरीका, हमारा इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने का तरीका जो गूगल और एआई ने स्मार्ट कर दिया है हमको, हर चीज हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। सो my question to you guys is, what's the first thing you do in the case of emergency, or maybe in the case of whenever you need some hardcore information? What do you do? What do you do? मतलब exactly क्या करते हो आप जैसे ही आपको emergency होती है? Please reply in the chat section, guys. Can I see the chat section flooding in? Anyone? Okay, you Google it. Okay, Deepak says Google it. Okay, what do you do in case of emergency, Deepak, or all the people? Search on the internet. Okay. Thanks, Kritika. Any more answers? कुछ भी इमरजेंसी होती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप हमारा क्या रहता है? सर्च माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स. ओके रुचि, बेसिकली अगर मैं इन तीनों को कंपाइल करूं तो यू गाइस आर रीचिंग आउट टू योर मोबाइल फर्स्ट, राइट? कॉल, डिस्ट्रेस नंबर, रिएक्शन, राइट? So you are reaching out to your smartphone on the very first place, yes? Right? So that is the case. Smartphone and digital has integrated in our lives so much कि हमको कुछ भी चाहिए, इमरजेंसी हो, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हो, हमारा पेशेंस नहीं हो रहा है, कुछ भी है, हम स्मार्टफोन उठाएंगे, हमारे नेटवर्क को कॉल करेंगे, हमारे रेलेवेंट पर्सन को कॉल करेंगे, हम स्मार्टफोन उठा के सर्च करेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालना है, राइट? So there is this screenshot I have taken it down, two posts taken down from AFAX that will ultimately change your mindset कि crisis में कैसे लोगों ने boom किया है. Number one is from Mr. Anuj Sharma, Xiaomi India के head. He says lockdown didn't really impact our engagement. You know what does this mean? कि लॉकडाउन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा एंगेजमेंट एंगल से, हमारी सेल्स वैसी हैं, हमारा सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट वैसा है, हमारे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप वैसा है. क्यों? क्या Xiaomi ने पहले से इतना कुछ प्रिपेयर करके रखा था कि उसको इतनी ब्रांडिंग करके रखी थी कि उसको लॉकडाउन में कुछ ज्यादा खास परेशानी नहीं हुई?
Okay, let me show you another. How many of you people know Dunzo? Dunzo, Dunzo. A lot of startup people must be knowing it. Delivery se related app, right? So let me show you another slide, again taken from AFAX Instagram. I've taken this screenshot down today because this was much more inspirational and aspirational for a lot of startup people here. Our marketing spend is at the lowest since the demand is high. लोग marketing क्यों करते हैं? Sales बढ़ाने के लिए, right? Yes, it's a Bangalore based app. क्यों करते हैं marketing लोग? Sales बढ़ाने के लिए, brand awareness बढ़ाने के लिए. लेकिन already अगर demand है और आप supply दे पा रहे हो और आपको shortage है supply की, या maybe you are competent enough to fulfill the demand, I think you should be doing the minimum marketing at that point of time. It can be just for brand awareness, brand recall, not for selling purposes and so on. So Dunzo के साई गणेश ने ये statement drop किया कि लॉकडाउन में हमको मार्केटिंग बजट हमारा मिनिमम हो गया. अभी लोग सोच रहे होंगे यार ये तो एडवर्स चल रहा है, हमको तो लॉकडाउन में लोगों ने बोला मार्केटिंग बजट बढ़ाओ, कुछ क्लाइंट ने एकदम जीरो कर दिया, कुछ क्लाइंट ये हो गए वैसे हो गए. सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट हाउ प्रिपेयर्ड यू आर. यू नो, कीप इन माइंड कि जो क्राइसिस आया है, आप पूरी लाइफ ऐसा इमेजिन करो कि आपके ब्रांड के लिए हमेशा नेक्स्ट मंथ इज लाइक अ क्राइसिस. आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी इस मंथ, दैट वुड बी लाइक अरे नेक्स्ट मंथ क्राइसिस है, इस महीने अपने को कुछ फाड़ करना है कि अपन क्राइसिस में सर्वाइव कर पाए. So it has to be like this. Only then you'll be able to come up like Xiaomi, Dunzo and many other brands like these. इनको कोई फर्क नहीं पड़ा. 1+8 Xiaomi ने 4-5 नए मॉडल्स लॉन्च कर दिए, लैपटॉप लॉन्च करने वाला है. Dunzo ने अपने टारगेट्स ट्रिपल हिट किए हैं, फंड रेज किए हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ एडटेक स्टार्टअप्स जिन्होंने फंड रेज कर लिए लॉकडाउन में. Why? Because it was opportunity. Yes, Zoom का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम कनेक्टेड है. Zoom CEO got billionaire overnight just because lockdown में उनकी sales spike हो गई, right? So if you go and read about these people, you'll be finding that their model was actually waiting for such kind of crisis. So they were not waiting for crisis. Their model was actually their business model was they needed some spike like this जो market में हलचल करे और इनका boom हो. But you can prepare your model in such a manner कि वो crisis proof हो जाए. So guys, there are a lot of things that can make your model crisis proof. For that, I'm going to share some of the basic basic things, general things जो हर startup पे apply होगी, हर चीज, हर brand, हर social media पे apply होगी. मैंने कुछ excerpts निकाले, मेरे पास कम से कम 5-6 हज़ार slides थी. मैंने उसमें से 100 slides, 90 valuable slides निकाल के आपके सामने रखी हैं. Then we are going to have much more Q&A जिसमें और valuable bombs मैं share करूंगा आप लोगों से. So I hope you guys are here fully prepared with your mindset and all your passion of learning with me, so that if I can share something with you, you can grasp it in the same manner. So let's clear the basic first. यहाँ पे मेरे पास कम से कम I believe that we have how many people right now? Let me just check. 95 people right now in the room, 96 and growing. Almost 100 people, let me call that. अगर 100 में से 10 लोगों ने भी इसका 10% भी उठा लिया स्लाइड का, तो I think this entire webinar, this entire setup and my empowering goal is through for the day. I'm done with the day. It's my successful day. All right. So guys, let's focus on this slide. Connect with me personally. Connect with me here on Q&A, whatever you want. Just make sure that you take a lot of value from here. Okay. Be very, very available from your mind. Now let's clear the basics first. कुछ लोगों के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है. क्या आप में से कोई क्विकली जवाब देगा कि आपके डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है या अंडरस्टैंडिंग क्या है, या आप डिजिटल मार्केटिंग को किस एंगल से देखते हैं? कोई जवाब देगा इस चीज का? Anyone out of these 9600 people? Meanwhile, I'll have a sip of water. Please reply. I'm waiting for the chat section. Okay. Ruchi says maximum reach. Abhishek says art of selling goods online. Great. Your presence on the screen, your brand's presence on the screen, sale through online platforms, marketing done through a mode. It's a quirky way to reach. Presence is online, strategy to reach our target audience online, marketing through the internet, awareing people about a brand without letting their mobile away. Okay. Latest. Okay. There are a lot of wonderful answers coming in. Logo से online contact करना is digital marketing. Wonderful. Okay, marketing is okay. You are alive on social media. That's great. So I'm going to tell you one awesome definition जो आप लोग खुद भी easily grasp कर सकेंगे,
अपने 70 या 80 ईयर्स ओल्ड सीनियर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को भी समझा सकेंगे और एक 9th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझा सकेंगे और क्लाइंट को भी इम्प्रेस कर सकेंगे. Do you guys want that definition? If yes, just reply with bring it on or BIO in the chat section. I want to see BIO or bring it on if you want to know that definition. So that definition is very simple, half-liner, very quirky and inspired from Mr. Philip Kotler only. That's great, a lot of BIOs. So there it is. The art and science of selling online. Abhishek, you missed one part here. So why is it the art and science of selling online? Because digital marketing में 90% creativity चाहिए, boss. It's like copywriting, graphic designing, video editing. You need a lot of editing, lot of creativity. Blog लिखना है, content create करना है, graphic बनाना है, creativity चाहिए. कुछ भी approach करना है, campaign बनाना है, ad बनाना है, creativity चाहिए. You can't just copy and paste or take inspiration from someone, but you need your IQ. Now, why science? To market, to know the strategy, to research about the audience, to research about the brand, competitors, everything. So in short, the art and science of selling online is digital marketing. This definition has been inspired from Shri Mr. Philip Kotler, the guru of marketing, and has written wonderful books. You can search his name on Google. You will find wonderful content around him, especially the books I've read about him. So let's move ahead. I hope this was much more beneficial to you for your brand whenever you want to pitch to someone with your understanding of digital marketing. So I have an analogy to start with where you guys can feel and understand what, how your digital marketing should be paved, how your digital marketing should be, elongated along the path. So try and understand one thing. It's going to be much more intimate right now. Okay. So be ready with some quirky words. मैंने कुछ अच्छे वर्ड्स हटा दिए हैं, उसको पॉलिश लैंग्वेज में लिखा है. सो आप लोग कैसे भी अज्यूम और प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको. इट गोज ऑन योर थॉट प्रोसेस. Guys, ये तो सुना होगा, content is the king. How many of you guys have heard it? Reply with a yes or I or me. Anything. Have you guys heard it? Content is the king. But why? मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ. This is content. आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है. This is content. आप पॉडकास्ट सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. एवरीथिंग इज कंटेंट. आप अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रहे हैं, वो भी आपको कंटेंट सुना रहा है. आप अपनी फ्रेंड से गॉसिप कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी बेस्ट फ्रेंड से गॉसिप कर रहे हैं, वो जो आपको बता रही है पूरा कंटेंट है. वो भले मसालेदार कंटेंट है, बोरिंग कंटेंट है, कैसा भी कंटेंट है, इट्स ऑल कंटेंट. कंटेंट इज इक्वल टू एवरीथिंग. द एंटायर information that can be prescribed as knowledge, that can be prescribed as valuable information, basically effective communication. Content is everything. Content is the king. All right, get that straight. Bina content ke you will never be able to grow as a brand. Bina content ke your brand will never be able to reach out to new people. You will never be able to attract new audience, right? Yes, Mayur, thanks a lot. Now what is the next thing? Who's the queen? Of course, सबसे सुंदर अट्रैक्टिव क्या रहता है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को? इट्स ऑल अबाउट डिजाइन, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू डिजाइन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. I'll just be back. Just sorry about that. Okay, sorry, that's done. So nobody was here. I have sent everybody. So somebody knocked the doorbell, so back door is open now. Sorry about that. So design is the queen. सबसे ज़्यादा attractive graphic design सोशल मीडिया पे जिसका दिखता है, कैरोसोल दिखता है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो थंबनेल किसी का बहुत अच्छा दिखता है. फेसबुक पे कोई आपने थंबनेल देखा या वीडियो देखा जिसका बहुत अमेजिंग थंबनेल था, या आजकल बहुत क्लिक बेट्स भी आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे कुछ थंबनेल में और कंटेंट पूरा बोरिंग रहता है. दे वांट टू सी यू टिल द एंड. सो डिजाइन इज द सोल ऑफ द कंटेंट. इट्स द क्वीन. राजा की जान रानी में रहती है, राइट? सो कंटेंट की जान डिजाइन में है. गेट दैट स्ट्रेट. ना अब राजा रानी कुछ तो करेंगे, तभी तो कुछ आगे निकलेगा. सो कॉन्वर्जेशन इज द रोमांस. अब इधर राजा रानी कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं. इट्स बेसिकली कंटेंट एंड डिजाइन हैविंग द कॉन्वर्जेशन विद द ऑडियंस. मैंने डिजाइन किया है कंटेंट ब्यूटीफुली सोशल मीडिया पे या मेरे ब्लॉग पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मैंने प्रेजेंट किया वर्ल्ड के सामने. मैंने उस चीज की लिंक उठाई और मेरे पूरे नेटवर्क को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल में मैंने सबको फॉरवर्ड करिए, एसएमएस में, वॉट एवर माई नेटवर्क इज अवेलेबल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज अवेलेबल. मैंने कॉन्वर्जेट किया मेरी ऑडियंस के साथ मेरी डिजाइन और कंटेंट की पोस्ट को और मेरे कंटेंट और डिजाइन को, राइट? इन शॉर्ट मैंने रोमांस किया. बेसिकली मैं और भी अच्छे वर्ड्स यूज करता था, कर सकता था रोमांस की जगह. मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग एज और जॉनर के लोग हैं, सो नोबडी गेट्स ऑफेंडेड. सो जस्ट अ सेक.
Now, what happens when the romance happens between the content queen and the audience? What happens? You know, something great comes out. Conversion is the baby. अगर मैं मेरा कंटेंट के थ्रू मेरी ऑडियंस से अच्छे से बात करूंगा तो मुझे क्या बेबी मिलेगा? कन्वर्जन, यानी कि बिजनेस, यानी कि लीड्स, यानी कि ऑसम रिस्पॉन्स. So guys, I hope this analogy is right fit in your mind. Content is the king, design is the queen, conversation is the romance, and conversion is the baby. I made this up for you. मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में या जहाँ भी स्कूल कॉलेज में जाता हूँ वहाँ पे और एक्सप्लिसिट लैंग्वेज में बोलता हूँ, बट सिंस दिस इज ऑनलाइन it's being recorded, so I'm using humble language here for easy to understand and grasp for everybody. So I hope that was good. Please revert in the chat section. Did you guys got that crisp of the analogy of it? Did you guys get it? The gist of it, the power of it? Great. So how to move forward? I have created a a set of things that will amaze you with, they're all generic. कोई एक इंडस्ट्री फोकस नहीं है, कोई एक स्टार्टअप कैटेगरी फोकस नहीं है, कोई एक पर्सनल ब्रांड फोकस नहीं है. इट्स लाइक कॉमन. Every brand, every startup, every human as a personal brand can apply these strategies. You're gonna have a lot of fun, guys. So stay tuned and be here. सबसे पहले अपने ब्रांड के गोल्स डिफाइन कीजिए. थोड़ा इमेज वियर्ड नहीं लग रहा है किसी को कि यार कुछ तो भी इमेज दिखा दिया है? इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ डिजाइन दो, आई रियली अप्रिशिएट इट, पर ये इमेज थोड़ा सा क्वर्की वियर्ड नहीं लग रहा है? समथिंग आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि एक उंगली में भी एक हाथ हो सकता है, राइट? सो व्हाई इज इट वियर्ड? डोंट यू गाइस फील दैट इट इज रॉन्ग? समथिंग इज रॉन्ग विद दिस. लाइक अगर मैं अपना हाथ दिखाऊं तो मेरे पास इतने हाथ नहीं है कि एक हाथ में 5 हाथ हो, बट व्हाई इज इट रॉन्ग? आपको नहीं लगता है कि पहले ही मेरे पास 5 उंगलियां हैं, यानी मेरे पास 5 टारगेट्स हैं मेरे ब्रांड को लेके, और उस हर टारगेट में मैंने भी अलग अलग 5 गोल देके रखे हैं? थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट मैं आपको इसका एक पॉजिटिव एंगल बताता हूँ गाइस. नंबर 1, you always should have one goal for every campaign, but your business, okay, you can't hear my voice. Am I audible now, Chetna? Am I audible, guys? Please revert in the chat section. Am I audible? Great, great, great. Thanks, Chetna. I hope I'm fine now because everybody can hear me. Great, thank you. So let me show you the positive side of this image, guys. Number 1, your every campaign that you are running should have one goal only one goal. And when you come to business or brand, it can have multiple goals. Like let's say, for an example, 5 goals, like this hand. Now every goal has to be divided into mini goals, just like you can see in this image, in this wonderful image. Every goal has to be divided and बांटने पड़ेंगे आपको अपने गोल्स अपनी टीम से, डेलीगेट करने पड़ेंगे, अलॉट करने पड़ेंगे, और टाइमलाइन के साथ. ऐसा नहीं मुझे कंटेंट बना के दे देना, साल भर तक नहीं आएगा ग्राफिक डिजाइनर से कंटेंट जो आप चाहते हो. 3 दिन में मुझे ये ग्राफिक डिजाइन रेडी चाहिए, then only you'll be able to get that content right. So you have to designate 5 goals first, or maybe more than that, then give mini goals, distribute those major goals into mini goals and distribute them into the team. So yeah, just don't mind if any graphic designers are here around watching Facebook Live or Zoom. That's just an example, क्योंकि सबसे ज़्यादा graphic designer और content writers, because they're the creators, इन दोनों की ही सबसे ज़्यादा बैंड बजती है पूरी digital marketing agency में और काम में. Okay, Anand, we'll revert to your question later, buddy. So what kind of goals you can define? There are various goals. Let's get through them one by one in a very brief manner. Lead generation. सब बहुत सारे बिजनेस को लगता है मुझे बस लीड मिल जाए. इट्स लाइक मेरे पास बस लीड आ जाए मैं तो इजीली कन्वर्ट कर दूंगा, या मेरे पास बस इंक्वायरी आ जाए. मुझे इंक्वायरी की कमी, मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मेरी वेबसाइट रेडी है, मेरा सोशल प्रेजेंस रेडी है, मुझे सिर्फ लीड चाहिए, एंड आई विल बी एबल टू सेल इट वेरी क्विकली. सो अ लॉट ऑफ बिजनेस गो फॉर लीड जनरेशन. नेक्स्ट is increase traffic to the website. A lot of people come want that लोग आके वेबसाइट देखें, वहां पे इतना वंडरफुल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है या सर्विस प्रेजेंटेशन है कि अपने आप मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, या मेरी ई बुक बिकेगी, या मेरा कोर्स बिकेगा, या मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, या मे बी लाइक पीपल ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएगा तो मेरी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी सर्च इंजन में, मेरा ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो जाएगा. Different kind of goals, right? Next is e-commerce sales. A lot of people believe that e-commerce मेरा है प्रोडक्ट तो मेरी सेल फायर होना चाहिए सेल में. Guys, it doesn't happen overnight. You need a lot of things. You need to optimize for SEO. You need to run ads. You need to go for a lot of other things like branding अब मैं भी आगे और बताऊंगा क्या क्या करना पड़ेगा. Next is branding. कई लोगों को लगता है यार मेरा प्रोडक्ट हर हैंड, मेरा स्टार्टअप है, मेरा ब्रांड
हर सोशल मीडिया पे होना चाहिए, गूगल पे टॉप पेज पे आना चाहिए, आए दिन मैं जो पोस्ट करूं मेरे व्हाट्सएप, ईमेल और टेलीग्राम और एसएमएस और दूसरे नेटवर्क से शेयर होनी चाहिए, मैं लोगों को याद रहना चाहिए। अगर मैं सबसे बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पूछूं ब्रांडिंग के एंगल से, तो कौन सा है सबसे बेस्ट? एनीबडी वुड लाइक टू रिप्लाई हियर? आई नो द आंसर इज गोना बी ओनली वन, बट आई एम स्टिल आस्किंग यू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट कौन सा है? कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हो? एनीबडी इन दिस रूम वुड लाइक टू? Amazon। क्यों? इसका सोल रीजन है ब्रांडिंग। पीपल ब्रांडिंग को इग्नोर करते हैं, वो इतना ब्रांड रिकॉल करता है रीटारगेटिंग करके, इतनी एड्स दिखाता है आपको, आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो इतना ब्रांड रिकॉल देता है आपको, न्यूज़पेपर एड से लेके बस स्टॉप के होर्डिंग तक, यू नो आपके एसएमएस मार्केटिंग में, आपके सोशल मीडिया पे, आप कहीं भी जाओ Amazon आपको दिखेगा ही दिखेगा, देयर एवरीवेयर, देयर, इट्स कॉल्ड ब्रांड रिकॉल। So remember this, it's an art, okay? And they have actually cracked the science of being reaching out to you. आप click करोगे retargeting science and brand recall art with the creative, with the very same thing that you clicked on. It's an art, right? Now नेक्स्ट टारगेट कैन बी ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं अच्छे लेवल पे। आप अपने कॉम्पिटिटर को नेगेटिव रिव्यूज डलवा सकते हो, डोंट डू दिस, बट या आप खुद के लिए पॉजिटिव रिव्यूज मैनेज करवा सकते हो, प्लस डोंट बाय देम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है कोरा पे आपके ब्रांड के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में, गो अहेड रिप्लाई देम। किसी ने आपके ब्रांड के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दिया है किसी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, गूगल, ग्लासडोर, कोरा, एनीवेयर एल्स, somebody has written any negative about a brand or maybe positive, go and address them within an hour. जितना जल्दी आप एड्रेस करेंगे उतना अच्छा रिएक्शन मिलेगा आपके ब्रांड को, राइट? सो रिमेंबर दैट, अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा, दूसरे लोग देख रहे हैं, अदर पीपल हैव आईज ऑन दैट पोस्ट और दैट रिव्यू, ओके? मैं अगर 3 महीने बाद भी आया उस इंसिडेंट के और मैंने देखा कि नहीं ORM में आई मीन एक नेगेटिव कमेंट में, एक नेगेटिव रिव्यू में ऑसम हैंडल किया है इस ब्रांड ने, I'm gonna get happy and collaborate with you and buy products from you. So that is how it works. ORM is one of the campaign or one of the goals for every brand, right? Next is customer service. How many of you guys are on Twitter? Please raise your hand. Anybody? How many of you people are on Twitter? Of course, like AIC RNTU का तो हमने manage किया हुआ है, Twitter RNTU का and CVRU का काफी तो content and all. So I know the brands are there, but yeah. Okay, great. So a lot of people are on Twitter. But now my next follow-up question is, how many of you people have reached out to maybe a bank, maybe a restaurant, maybe something else for complaining them कि मेरा broadband नहीं चल रहा है या मुझे बेकार सर्विस मिली? Anybody in this room? Yes, Jyoti. Use Twitter as a customer care service from brand angle as well and from consumer angle as well, right? मैं ट्विटर को प्रॉपर कस्टमर केयर सर्विस के तौर पे यूज करता हूँ। मैं सारे ब्रांड्स, मुझे एयरलाइन से प्रॉब्लम है, मुझे बैंक से प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड से प्रॉब्लम है, आई ओन 7 क्रेडिट कार्ड्स, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता था, लाइक महीने में 2 या 3 फ्लाइट्स होती थी इधर उधर इंडिया में, तो आई बिलीव दैट कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ट्विटर में, अगर कस्टमर केयर नहीं सॉल्व कर पा रहा है, ट्विटर की हेल्प से विद इन एन आवर आई यूज्ड टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड on a priority basis, on a red flag. It's faster and trending, right? Dipti, wonderful. So use Twitter as a customer service and use Facebook Messenger as a customer service as well. Okay. Now, targeting anything specific is like Amazon का example best था, but you guys can go ahead and target with some specific people with some specific content as well. आप कोई भी content piece उठाओ, एक specific audience को target करो. I think that's gonna do wonder अगर आपकी strategy right है. So these can be multiple goals. You can select few goals. You can select one goal. You can select all of them and go ahead and shoot them all. Okay. So I hope you guys enjoyed the definition of goal and selection of goal. लेकिन सबसे पहला step goal के लिए क्या करना रहता है? सबसे पहला step रहता है researching the audience. That is a very important part of the entire marketing game. Okay. Whenever you want to research the audience, it takes a lot of tools, a lot of patience, a lot of time. So there is a quote from Shri Abraham Lincoln ji, the former United States president, rather the first. He told, give me 6 hours to chop down a tree. I'll spend the first 4 hours sharpening the axe. What does this mean? मैं 66% टाइम मेरा किसमें स्पेंड करूंगा? मेरी एक्स को शार्पन करने में, यानी कि जो आपके सामने लिखा है रिसर्च, मैं रिसर्च में अपना 60% टाइम इन्वेस्ट करूंगा ताकि मुझे पता रहे कि मेरी ऑडियंस कौन है, मेरा प्रोडक्ट, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरे लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में और मेरे ब्रांड के बारे में, how to deal with all these things. So you guys see,
research is a very, very critical part. As Abraham Lincoln said, I've linked these two things of Abraham Lincoln ji and the research game above, as it is one of the most important marketing game. I believe that without research, agar aap just haywire mein start ho jate ho, you'll end up losing a lot of money, time, energy, resources, and maybe brand value. So never, never, never go ahead in the research. Okay. Which point, Deepthi, to be specific? I can come back. The targeting one, Deepthi? Yeah. So it's all, hi Abhishek, how are you? So it's all about, I can pick a piece of content, run ads, and target specific people via ads. Like if I want to target 28 to 30 aged of females for selling a maybe hair comb or hair roller or maybe a eyeliner or mascara that is pretty costly from other brands, I think I can do that with that attractive piece of image for that specific age and gender and location. Okay, I can especially target South Delhi, South Mumbai, and such kind of people, such kind of areas, or maybe some foreign places. So targeting specific audience with a specific content can be a wonderful goal as well. All right. Now let's move ahead. How do you keep an eye? How do you create a persona? अपनी ऑडियंस को कैसे डिफाइन करना चाहिए? हमने रिसर्च तो करी, अभी बात करी ऑडियंस की. सी अभी हम लेयर वाइज बात कर रहे हैं. सबसे पहले हमने गोल की बात करी, फिर हमने बात करी कैसे रिसर्च करना है. तो अब हम बात करेंगे कि ऑडियंस की रिसर्च जो होती है वो कैसे कहाँ कहाँ आप एब्जॉर्ब कर सकते हो अपने एनालिसिस में, अपने पर्सोना बनाने में. व्हाट इज पर्सोना? अगर मैं आपका कस्टमर हूं तो लाइक आई एम 34, आई एम मेल, आई लिव इन टियर 2 और टियर 1.5 सिटी रादर, मिनी मुंबई का जो अभी आपने मीम देखा होगा काफी. सो आई कॉल इंदौर एज अ टियर 1.5. ना टियर 2 है ना 1 है, सो इट्स इन द सेंटर. लेट्स से आई एम ओके टॉकिंग प्रैक्टिकली, speaking practically. I'm 34, male, tier 2, and I have interest in tech. I have interest in gadgets. I have interest in online things, anything related to that. I can buy gadgets related to video shooting and everything like that. So what are the things that are gonna keep you need to keep in mind as a brand? First of all, whatever you need to do is SEM Rush is an amazing tool. I'm gonna show it to you right now, and it is free for some point of the time. Great, a lot of people are engaging with me on Q&A as well, so thanks a lot guys for the answering. For an example, let me just search amazon.in. ये मुझे बताएगा, suppose Amazon is my competitor. Okay, I need to sign in. Just excuse me for a moment because sign in is required. इतना डेटा देगा ये मुझे मेरे कॉम्पिटिटर की तरफ से कि ये कौन से कीवर्ड्स पे कितनी ऐड चलाता है, कौन से कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, कितना सर्च ट्रैफिक आ रहा है, कितना पेड ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोगों ने इसको बैकलिंक या लिंक देके रखी है अपने इसकी वेबसाइट्स पे, कौन सी कंट्री में कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रेंड हो रहा है. एंड दिस टूल इज फॉर गॉड डैम फ्री फॉर इनिशियल सर्चेस. व्हाट डू यू नीड? ये देखो मेन कॉम्पिटिटर्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्लाइड्स. कैन यू सी दिस? So, मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ये अमेजन इधर है, नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन है, फ्लिपकार्ट, नेक्स्ट कौन है, दिस दैट. I mean, come on, I can search for anything on this goddamn tool. कौन से टॉप पेड कीवर्ड्स पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है अमेजन को? पावर बैंक, ब्लूटूथ हेडफोन्स, ड्रिल मशीन, एंड सी what kind of distribution. Even I can go for more in depth if I just explore this tool more. I'm not going to invest much more time here. I'm just going to give a brief. For any startup, for any brand, for any personal brand, you just need to put the competitor's website here. Plus, the best part is, the optimistic part is, you can put your website to analyze yourself here as well. All right. So, मुझे नहीं लगता कि इन टूल से बेटर कोई और टूल है कंप्यूटर को एनालाइज करने के. बाद तरीके बहुत सारे हैं. एक और तरीका है कंप्यूटर को एनालाइज करने का. द नेक्स्ट वे इज, फॉर एग्जांपल मैंने मेरा पेज खोला, मेरा फेसबुक पेज, मेरा मतलब जिसमें आपका एडमिन एक्सेस हो. व्हेन आई से मेरा, इट मींस माय एडमिन एक्सेस. So let's say I'm going to go here in the more section and I'm going to go in the insights section. So you can see your pages insights up to last 28 days here. But what am I going to do is I'm going to scroll it to the bottom. मैं सबसे नीचे scroll करूँगा. Just wait for it to load and see. I'm going to show you something. Can you see
पेजेस टू वॉच, कैन यू सी दिस कैटेगरी? मैं कॉम्पिटिटर का पेज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने पेजेस ऐड किए हैं, मैं दूसरे भी पेजेस ऐड कर सकता हूँ सर्च करके, अप टू 5 to 6 पेजेस आई कैन ऐड, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स एम आई गेटिंग आर दीज 4 मेट्रिक्स. उस पेज के टोटल लाइक्स कितने हैं, जस्ट अ सेक, टोटल 4 मेट्रिक्स, उस पेज के लाइक कितने हैं, उस लास्ट वीक से कितना ज्यादा ग्रोथ है, फॉल है एंगेजमेंट में, इस हफ्ते उन्होंने कितनी पोस्ट करी है, और इस हफ्ते उनका एंगेजमेंट कितना है. ऑफ कोर्स आई कैन सी कि ये तो जनरल है, बट दे आर रनिंग एड्स, दे आर रनिंग एड्स, it's like organic to them. I can add a lot of platforms like that. So you can see 5 to 6 platforms I can add, and I can keep on changing to analyze the report. You see that you can analyze Facebook's analytics of other people, of other Facebook pages right here in your insight section. So there is nowhere to go ज़्यादा. Social media पे भी कुछ search करना है तो you can do that. अच्छा हो क्या रहा है इन सब से? Guys, try and understand one thing. You are knowing more about the audience. I hope I'm not wasting time. Great. So I'm going to make it quick because बहुत ज़्यादा content है. If any queries, just throw in after 5 p.m. More than welcome. SWOT analysis कीजिए. SWOT analysis सबको पता है क्या होता है, and know which platform they are on. Like वो TikTok पे ज़्यादा है, Instagram पे ज़्यादा है या Snapchat पे ज़्यादा है. Then know what they are doing on those platforms. स्टोरी ज़्यादा डालते हैं कि सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कि एक्सप्लोर सेक्शन में जाते हैं. A good research about it. This is why I told you 66% of the time is going to go in research. Know what they did before, how well their social media strategy is working. Basically, you need to go through a lot of things here. Let me just keep the chat section open. Great. Now, how do you create a blog? Basically, this is just one slide about following the goals and how do you create a website. Go to wordpress.com. Free में WordPress website बन जाएगी. Blog name बनाओ, niche search करो. Salon का startup है, तो everything around haircut. You can go around, promote that, and repeat the entire stage. Then how do you? Okay, great. I'm on right slide. So basically, then you need to list your website on specific keywords. तो अपने keyword को research करो. जो मैंने tool बताया, SEMrush, Google Keyword Planner, and a lot of things like that. Write long and valuable content. Optimize on-page and off-page SEO जो होता है. Try to get a lot of backlinks and social sharings and get mentioned on the blogs, and basically speed up your website accordingly for mobile and for computer both. I'm going to quickly share amazing content here. 3 E's for content on website and social. E, number 1, stands for engagement. Content that's meant to start a conversation, like your own opinion or a popular topic. Evergreen content, जो कि generally हर बार लोग बात करेंगे, जैसे कि Bollywood movies या something like that. आप अपना content relate कर सकते हो. Events जो कि trend में चल रहा है, industry में चल रहा है, पूरे world में चल रहा है, जैसे Carrie Minati versus Faizu या maybe YouTube versus TikTok. Create some content around it, okay? Guys, there is amazing content coming up, so I'm just rushing to that particular piece of content. So Seth Godin का नाम सुना होगा किसी ने? Seth Godin, he is an amazing person, a baldy guy with a wonderful specs, writes amazing books, and उन्होंने 4 चीजें लिखी हैं content की quality के बारे में. This is the secret sauce, guys. आपके content में emotion होना चाहिए. The more emotions you add into the content, the more compelling it will be for the user to engage with your content. वो emotional, आप कभी भी देख लो, आप किसी भी comment पे like, share या कमेंट तभी करते हो जब आपको इमोशनली हिट करता है, या तो एंगर से या हैप्पीनेस से या वाव से, वाव वाली फीलिंग से, समथिंग लाइक दैट. ओके, जैसे आज सुबह मैंने 9 गैग का एक वीडियो मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया. इट वाज अबाउट 153 डेज. एक लियोनार्डो खन्ना करके एक पर्सन है, उसको स्ट्रेचिंग करने में लगी, जो हम पैर स्ट्रेच करते हैं, फुल स्ट्रेच ऑन द ग्राउंड, 153 डेज, और उसने हर डे का वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है और उसको क्लिप में कंपाइल किया है. आई लव दैट. So I emotionally got attached with it because it was like, wow, क्या किया है उस बंदे ने. So I shared it on my Instagram story. So make it share worthy, make it emotional a bit. Change. How are you changing people with your product or content or maybe emotion, anything? You have to change people mindsets. Like अभी आप लोगों का इस 40-45 minutes में 1% ही सही mindset change हो गया होगा डिजिटल के एंगल को लेके, कि इतना कुछ डिजिटल में, या ये नया था, या ये सुना हुआ था, या ये अमेजिंग चीज बताई मयंक ने, या ये स्लाइड ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है. बेसिकली इट चेंज्ड यू, राइट? सो व्हेन आई टेल यू ओके दिस इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन, अभी तो सिर्फ 28 पेजेस हुए, 100 पेजेस हो रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द सेशन यू आर गोना से
I think we needed to have this for 2.5 hours, right? So, or maybe like boring the presentation, maza nahi aaya, ya आधे घंटे का ही होना चाहिए था. You are going to express it because you felt some emotion with that, right? So, alert. Once you have changed someone, I just alerted you guys. You got the catch? And share. How can you get people to tell each other? Basically, if you love this, you can connect with me. You can share my content. You can share AICR induced content, Niti Aayog, about this webinar next time, whenever it is happening. Share about it because you got immense value from here. I can request you for that. Okay. Now, this is one growth hack, guys. Gather as much data as you can, numbers, email, whatever you can, because यही targeting करते हैं. मैं number और email से भी Facebook पे target कर सकता हूँ. कॉस्टली रहेगा, बहुत पैसा लगेगा, बट आई कैन डू दैट. ओके, बिकॉज आप देखो किस कोई भी कंपनी टॉप पे क्यों जाती है, एप्पल गूगल वो टॉप पे क्यों है, क्योंकि उनके पास डेटा है. अमेजन टॉप पे क्यों है, डेटा है उसके पास. सो अगर आप अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे रहना चाहते हो तो डेटा रखो. मेरे पास इतना डेटा है, मेरे पास 77,000 इन्फ्लुएंसर्स का डेटा है ग्लोबली, जिसमें से 12,000 इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के हैं, 4400 टेक जर्नलिस्ट्स का डेटा है, 28,000 वर्ल्ड वाइड जर्नलिस्ट्स का डेटा है, सब एक्सेल शीट में मेरे पास स्टोर पड़ा है. मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम माय विजिटिंग कार्ड्स, फ्रॉम ऑल माय इवेंट्स दैट आई गो, फ्रॉम ऑल द पीपल आई कनेक्ट एंड गैदर डेटा फ्रॉम माय कॉन्टैक्ट लिस्ट, लाइक 10-12 हजार की मेरी फोन बुक कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सब मैंने एक एक्सेल शीट में बना के रखा है with their emails, whomsoever emails I could gather. So you see, it's all about data, and data wins the game. I'm going to show you this awesome video. It's going to be very engaging. Proper salesmanship किसे कहते हैं? This is one hell of an example, okay? Proper salesmanship किसे कहते हैं? Okay, I hope you guys are enjoying. Yes, Abhishek, we are going to come to that. I have that Surf Excel ad as well, so don't worry about that. सर मुकेश का पेमेंट ब्लॉक हो गया. आपके पेपर चेक करने. See, that's more relatable ad, right? Hiccups. सबको पता है कि पेमेंट ब्लॉक हो गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो इतना चलता है, बच्चा तो छोड़ो, बाप पे चुप हो जाएंगे. दे दूं भैया? कौन है, बेबी है या बेबा? बेबा. अच्छा, मोदी जी. मुझे लगा रंडी चाहिए. मोदी जी के लिए डोरेमोन नाम तो सुना ही होगा. क्या भाव है? 120 का बेचता हूँ, 100 के नीचे 99 में भी नहीं देता हूँ. कैश नहीं है तो पेटीएम से लेता हूँ. पांडे जी का बेटा हूँ, खिलौने बेच के जीता हूँ. He updated his payment terms and conditions. No bargain. Awesome sales. I'm going to play this video for only 1 minute because it's 6 minutes long, 6.5 minutes. Trust me, you guys can watch this video again. Avdesh Dubey नाम है इनका, talented train vendor के नाम से you can find this video. One of the best sales videos I have came across throughout this decade. One of the best. That is not so polished and professional. It's raw. So raw sales. This guy, nobody knows better than this. Okay. So just have a look for next 40 seconds. नहीं हमारा है. तब कैसे विकास होगा देश का? बच्चों के लिए इतना नहीं सोचते भैया. आपका खेलता है तो हमारा खाता है. Wasn't that emotional line? आपका खेलता है तो हमारा खाता है, बच्चों के लिए इतना नहीं सोचते. अरे खर्चा तो है ना. Guys, लाइफ में तीन सबसे ज्यादा इवेंट्स पे खर्चा करते हैं हमारे पेरेंट्स. जब हम पैदा होते हैं, ओके, लेट्स टेक अ जेनरिक एग्जांपल. जब फैमिली में कोई पैदा होता है, खर्चा होता है लपक के. जब मैरिज होती है फैमिली में किसी मेंबर की, बहुत मतलब ब्लाइंड खर्चा होता है, लाइक इवन लोन लेके पेरेंट्स खर्चा करते हैं किसी के. और जब कोई घर में एक्सपायर हो जाता है, गॉड फॉरबिड, बट जब कोई एक्सपायर हो जाता है ह्यूमन, बेसिकली these three stages of life, these three things of life are connected with us emotionally in a very deep manner. We get emotional hit, so we stop thinking practically about money. So emotion is the name of the game, guys, and the content, that is the secret sauce. ये तो क्या है, हम इंडियन की खाल से तो दूसरों की थाली में चावल लंबाई दिखता है, ये तो हमको भी पता है. ऐसे ही केजरीवाल को मोदी की थाली में दिख रहा था, देखो खुद की थाली छीन रही है. आप टेंशन मत लीजिए, चाहिए तो नंबर ले लो, खराब हो जाए मिस कॉल देना, फोन पे बता दूंगा कहाँ फेंकना है. मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी बता दूंगा, फोन कर देना, बता दूंगा कहाँ फेंकना है. आई थिंक दैट्स मार्वेलस वे ऑफ प्रेजेंटिंग. यू कैन सिंपली से वी डोंट टेक रिटर्न्स, इट्स फिक्स प्राइस. और उसने कितने अमेजिंग स्टोरी टेलिंग तरीके से बताया. बराबर भाव बोल. तो सॉरी प्लीज, आई एम नॉट भाव करिंग. 2 लेना है बोल बराबर. 10 लेना हो तो 1000 लूंगा, नहीं लेना है तो आपको धन्यवाद दूंगा. भगवान के अगली बार प्लेन में आओ, क्योंकि ट्रेन मैनेजमेंट को फायदा नहीं देता है. सर आपके हैं अनमोल रतन? हाँ है ना. तो ले जाइए ना सर. वेरी नाइस. तो देखो, एक जेंट्स होकर जेंट्स की फीलिंग समझ. What just happened here was he did all his sales, he did all his marketing, and when somebody just got converted, the only best thing he could do was create it as a testimony. The testimonials, reviews.
I believe that this video, अगर आप 50-60 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आप पक्के सेल्समैन बन जाएंगे. All you need to do is look from my eyes, a marketer's eyes. आपको चाहिए तो ये वीडियो का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ अभी. I think this video will change a lot of startup owners, lot of people, marketers, lot of students change their mindset कि कैसे story telling करते हैं, कैसे shift करते हैं mindset को. Okay, so let's get back with the slides and let's see what we have more in the backpack. Okay. Now, there are a lot of social media related questions. There might be, but there are like social media के बारे में कुछ बताओ, ये हर session में बोला जाता है. So I'm going to speak a bit about it. What exactly is social media? We all know what social media is, right? Isn't it? So let's discuss the real core reason of social media existence. कोई बताएगा कि social media exists क्यों करता है? Anybody know? Can somebody tell me why social media exists? Quickly, guys, in the chat section, not in Q&A. Q&A can get me confused and make multiple clicks. Why social media exists? Why was social media built basically? Anyone? Human is a social animal to communicate. Okay, any more? Because it connects people. Great, Abhishek. Any more? Connecting socially. Meeting in person is expensive. Oh, Sumit, good one. It provides you the data of people. Okay, good going, Aman. Data collection, phone is always in hand to connect people. But यार मैं पूछ रहा हूँ social media, मैं features नहीं पूछ रहा हूँ social media के. There is networking with people in career. I'm asking why was social media built? Core reason क्या exist करने का? Santanu, you're almost there. Minimize the time and distance. It provides knowledge. Okay, Google भी knowledge देता है, मेरे पापा और दादाजी भी knowledge देते हैं. Social media क्यों बना था? Engagement, no. There was a gap in communication. Okay, somewhat there. Okay, I'm gonna disclose that and raise the curtain here without wasting any more time. Social media was built to based on the community model. आप एक समाज से हैं, आप एक कम्युनिटी से हैं, आप एक कास्ट से हैं, आप एक कॉलोनी से हैं, आप एक बिल्डिंग से हैं, सोसाइटी से हैं, आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस से हैं. सब जगह ग्रुप्स बनने लगे. आपने देखा आपके फ्रेंड्स तक के व्हाट्सएप ग्रुप बनने लग गए. इट्स कॉल्ड कम्युनिटी बिल्डिंग. लेकिन हम एज अ ब्रांड सोशल मीडिया पे सब करते हैं एक्सेप्ट कम्युनिटी बिल्डिंग. ये क्या है? हम प्रमोशंस करने लग गए, हम डेटा कलेक्ट करने लग गए, हम फ्रेंड्स बनाने लग गए, हम फेक अकाउंट्स बनाने लग गए, हम स्टॉकिंग करने लग गए. क्यों? Of course, if you are on social media, you are a stalker. That is no doubt. It's in a positive sense. You are a stalker because you see other people's profile and learn from them in a positive manner. We are stalkers by default. It's our instinct. Let's talk about community building. कहाँ गई community building? सबको business चाहिए, लेकिन community किसी को build नहीं करना है. क्यों? आपको याद होगा आपके दादाजी या उनके आपके परदादाजी या आपके पेरेंट्स ने जो business किया है, it was in a closed community. आप उनकी एक पूरी कम्युनिटी आपके पेरेंट्स या दादाजी को उनके नाम से जानती है. That was without social media. You have the access of social media and you are still unable to do it. Makes me wonder why. I have a huge community of a big user base. Why? Because I keep on providing value to them. Why? Because I keep on sharing my insights with them for free. I keep on mentoring a lot of people. That is my community, my herd, my base. I don't expect anything from them. It's just that they keep on coming up with a lot of questions, a lot of queries, a lot of opportunities, a lot of wonderful things. It's all community that is going to make a difference for you, okay? Social media का inception कहाँ से हुआ था? 6 degrees of separation. A lot of people, you people must be knowing it, लेकिन मैं एक और बार बता देता हूँ. 6 degrees of separation is a theory कि मेरे और पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, मेरे और फॉर्मर यूनाइटेड प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी के बीच में, मेरे और संजय दत्त के बीच में, मेरे और आपके बीच में, या मेरे और any alive person on this planet, let's say Arnold Schwarzenegger के बीच में, there are 6 dots, 6 right set of people जिसको आज हम सोशल मीडिया पे म्यूचुअल फ्रेंड्स बोलते हैं. According to this theory, मेरे से 6 dots अगर मैं सही कनेक्ट कर लूंगा तो 7th पे मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, मिस्टर बराक ओबामा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से खड़ा होऊंगा, बात कर रहा हूँगा या कनेक्ट कर पाऊंगा. ओके, बट ये रूट वो था, इंसेप्शन था, द सीड था सोशल मीडिया का. सोशल मीडिया आया, ये डिग्रीज कम कर दी 2 या 3 में. तभी आपको कई लोग ऐसे दिखते हैं कि आपके और उनके बीच में 100, 127, 130
म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे जैसे मेरे साथ हो रहा है आजकल, एंड यू इवन डोंट नो दैट पर्सन, लेकिन आपके 125 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं. डू यू गाइस गेट इट? यहाँ कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको किसी तक पहुंचना है तो आप सिर्फ उसके, यार मैट्रिमोनी में देखो फेसबुक पे लोग कैसे कॉल करते हैं, यार यू नो दिस गाय, यू आर इन फ्रेंड लिस्ट, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दिस गर्ल और गाय. 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन. मुझे अगर शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचना है तो मैं उनके पीए का म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढूंगा कि उनके पीए कौन है और मेरा उनका म्यूचुअल फ्रेंड कौन है. मुझे से मेरे म्यूचुअल फ्रेंड को कॉल करना है, मेरी पीए हिसाब से मीटिंग कराओ, पीए साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शिवराज सिंह चौहान जी से मिलवाओ. 2 डिग्रीज ऑफ 3 डिग्रीज ऑफ 2 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, not more than that. See, guys, understand this, that social media has decreased the degrees of separation, but it has came out to outburst. 150 लोग एक फ्रेंड रिक्वेस्ट में है मेरे म्यूचुअल, और मैं उस बंदे या बंदी को नहीं जानता. So use it wisely, use it good, build community around it, provide a lot of value. Okay, so core use of social media was basically to build communities. That is what we concluded here. प्लेटफॉर्म वाइज अगर मैं ट्रैफिक दिखाऊं तो फेसबुक पे 2.23 बिलियन मंथली एवरेज यूजर्स आते हैं, यूट्यूब पे 1.9, व्हाट्सएप पे 1.5, मैसेंजर 1.3 एंड सो ऑन. इंस्टाग्राम पे जस्ट 1 बिलियन प्लस समथिंग. So you see now TikTok पे थोड़े बढ़ गए हैं though in the past 1 or 2 months, but you see all these platforms are growing. Now your question would be मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाऊं? So क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है, आपकी ऑडियंस किधर है. आप दुकान वहीं डालोगे जहां उस चीज का मार्केट होगा, राइट. आप कोई, अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है तो आप 3rd फ्लोर पे नहीं खोलोगे, आप खोलोगे मेन रोड पे जहां पे इजीली गाड़ियां आ सके, राइट. don't be that part of that joke. So if you want कि आपका business या brand अच्छा चले तो you have to be on that platform to provide convenience for that audience. Facebook is the king of the hill at the moment. अभी और कमर्शलाइज होता जा रहा है, अभी और अच्छा कमर्शलाइज भी हो रहा है, नेगेटिव एंगल में भी बोल रहा हूँ, और बेटर भी हो रहा है कम्युनिटी बिल्डिंग में, क्योंकि पोस्ट की रीच नहीं है लेकिन फेसबुक ग्रुप्स की रीच बड़ी है. सो अगेन it takes the crown. Instagram is lifeline for youngsters, influencers and a lot of brands. सारा quirky content वहीं जाता है. Snapchat is the private jet. You can share a lot of private stuff, personal stuff, and you can connect with a lot of on a personal note by maintaining your privacy. So-called privacy. Privacy is a myth, by the way. Basically, parents के सामने privacy, दूसरे friends के सामने privacy. That's it. Pinterest, ये एक research आई थी कि 2016 में अमेरिका की 70% women अपना apparel, अपने कपड़े Pinterest पे देख के खरीदती थी. Isn't that an awesome insight? So you can do wonders on Pinterest as well. वहाँ पे long infographics आते हैं. Okay. My personal favorite LinkedIn for all the professionals, by the professionals. यहाँ पे कुछ me too नहीं करना, stalking मत करना, और dating के लिए please मत करना. लेकिन I object this point. Why do I object? यार अगर for an example I'm married now though, but for an example I'm not or you are not, and you want to go ahead and find for the perfect match. You need someone who is ambitious. तो उसका प्रोफाइल देख के, प्रोफेशनल प्रोफाइल देख के तो आप डेट करना चाहोगे ना. So I think LinkedIn is one of the best platforms when you have good intent for dating purposes, not for irritating someone or something like that. But yeah, I think LinkedIn is one of the best matchmakers for corporate people, but it is one of the best matchmakers for startups, business owners, and people looking for investors, and investors looking for startups to invest. It's one of the best matchmakers so far. LinkedIn पे जो professional content और professionalism follow होता है, I salute it, and please maintain that decorum there. Okay. Facebook पे you can go for videos, image and short text, much more engaging ones. Instagram पे you can go for videos, image and stories and IGTV videos, जिसका monetization चालू हो गया अभी. Snapchat पे again the same, video, images and stories. Pinterest पे you can go for long images like infographics, short videos and quirky design content. And LinkedIn पे you can go for long articles, short videos and majorly emotional content. आप कोई और वीडियो उठाओ कि एक बच्चा मैंने कल एक वीडियो देखा जो एक सेलिब्रम करके एक बीमारी है उससे था, and he was running to the finish line, fall 3 times, and there was one entrepreneur who has written like 500 to 600 words on that video. He never give up, never really give up. I read that content completely, saw that video, got hit emotionally, and I sort of got inspired and motivated. So this is how you can play around LinkedIn content. Okay. Now, guys, I hope you are with me. Do you want me to come up with more content? Reply with a BIO. We can go for like 10 more minutes and then we can address the Q&A for 20 minutes. Great. I hope nobody's feeling bored here. If anybody's feeling bored, they can share in the private chat.
उनकी बोरियत दूर कर देंगे हम. No, not at all. Great, thanks Abhishek. So what exactly is a trend? अगर इसका नाम देखा जाए तो it's called a fashion. यार मेरा दोस्त मंकी वॉश जीन्स पहन के आया है, मुझे भी मंकी वॉश चाहिए. ओके, बेसिकली बाइक पे वो वाली एसेसरी चल रही है, या मे बी यू नो दिस स्मार्टफोन इज इन ट्रेंड, दिस लैपटॉप का एसेसरी इज इन ट्रेंड, और मे बी समथिंग एल्स. इट्स अ फैशन सेट बाय पीपल फॉर पीपल टू फॉलो. ये वाले फिल्म स्टार ने या सेलिब्रिटी ने ये वाला ड्रेस पहना था. You can't follow Ranveer Singh's fashion all the time, but yes, you can follow something that will suit you, your audience, and your pockets. That is something that you can call as a trend. Now, Anand, we'll get back to your query, don't worry. So, what is the trend? You know, even for platforms, Orkut, कौन Orkut पे था? I love Orkut. Orkut पे कौन था? Please reply with yes. I mean, Orkut days were best days. कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई स्नैपचैट कुछ नहीं कर सकता जो ऑर्कुट ने किया था. सो ऑर्कुट वाज गाइस, हम अपनी स्क्रैप बुक मेंटेन करते थे, हमारी फीड पे हम पोस्ट करते थे और दूसरों की स्क्रैप बुक पे जाके हम टाइप करते थे, चैट करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक अमेजिंग UI UX. सो हमारे टाइम पे लाइक 90s किड्स का ऑर्कुट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट नाउ इट्स डेड. सो देयर आर टू लर्निंग्स. इवन दो यू आर बेस्ट, you have a mortality, your brand has a mortality. It will die if you don't provide the proper value. But if you provide enough value, इन्होंने आगे और 3 products निकाल लिए and they are going good. So you see, you should know what your audience likes at what time. It's just like you're serving in a restaurant. आज मेरे यहाँ audience chicken biryani खाने आई है. Sorry for people who don't eat non-veg or don't want to listen. क्योंकि veg biryani does not exist. So आज मेरे यहाँ लोग चिकन बिरयानी खाने हैं तो जरूरी नहीं कि कल वही लोग चिकन बिरयानी खाएंगे. वो लोग आके कुछ और भी खा सकते हैं, वो रायता भी ले सकते हैं या समथिंग एल्स, मोमोज भी ले सकते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि the same audience will consume the same piece of content or trend or product or service all the time. You have to evolve as per the audience, okay, as per the audience requirement, their taste buds, their mind taste buds, okay, mental taste buds. Now let's switch to memeology. Isn't meme a part of our daily routine to check it out, maybe to say हमने हमारा सरकाजम और पन बनाना ही मीम से सीखा है. कई लोगों को पता ही नहीं था कि सरकाजम कैसे देते हैं, उन्होंने मीम्स देख देख के सीखा, राइट? सो व्हाट इज मीम? An image, video, or a piece of text or video, whatever, typically humorous in nature, that is copied and spreads rapidly on the internet. Internet users, and often with slight variations. So you must have seen a lot of मीम्स जो ऑफेंड करते हैं किसी पॉलिटिशियन को, किसी सेलिब्रिटी को. जैसे बीच में नेहा धूपिया का आया, मीम बनने लग गए. अभी कैरी मिनाटी का आया, मीम बनने लग गए. सो यू ऑल, anybody in the room who doesn't know what meme is? Anyone? I hope everybody knows what meme is. Just go to Instagram and search hashtag meme. You will come to know that. So you can make a lot of money from memes. Use apps like meme chat जहाँ पे आपको ज़्यादा likes मिलेंगे आपके meme को, तो पैसे मिलने लग जाएंगे. You can build your own Instagram pages. मेरे पास एक memer का call आया 20 days back, around 15-20 days back. He's working in an MNC for 12 years. He's on a very senior post. बहुत अच्छा meme page चला रहा है. I can't disclose the meme page right now since I'm disclosing his identity in some manner. He said, Mayank, I am into a lot of corporate job. I can't, portray my identity unless this meme page comes out to be very good and some guide me for this meme page. मैंने उसको आधा घंटा consult किया without any charges. Though I have my consultation charges, but he directly called me and he said, man, anything I could make up to you, I can create content. Do you want me to pay for your per hour basis or something? I said, chill, just grow your page. And whenever you grow, I might ask a favor for someone else from you. So that is the kind of value exchange I'm doing. And that is the kind of work people are doing. Even a person sitting in corporate who has a sense of humor, sarcasm, or a pun and has a good amount of content knowledge or trend knowledge can create a meme. And he's actually starting making money out of it by, cross-posting other people's content. So you can do a lot of stuff. Take a screenshot of this particular slide. You have a lot of value bombs here. Just take a screenshot here. I'll move forward in 5, 4, 3, 2, 1. Patience चाहिए दोस्त हर चीज के लिए. So how to use memes for social media marketing? Cheers to you if you don't know that, because go and learn if you don't know. That is a sarcastic meme for you. How many engineers in the room? Please reply. I think this is for you. Any engineers? All right.
Fun enough. Yeah. So I think you guys can relate it. Now, मैंने थोड़ा engineer पे ज़्यादा रखा है because I thought, I'll have more engineer audience here, so it would be much more engaging. So I think you guys can digest that. Okay. So let's move ahead. Okay, there is a disclaimer here. The upcoming content is being showed with no disregard or no offensive feeling. I have no correlation, dur ka relation with any of the content or context or person or place or time or land or jaidad or their forefathers. I have downloaded the images from Google data to present in front of you as a positive example of controversial content. Please don't ask to link my Aadhaar card with this content. So again, this was a main disclaimer as well. Let me get ahead with it. How many of you people have seen any of these series? Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Big Boss, Sach Ka Samna, Crime Patrol, CID, what? Have you guys seen any of these? Yeah. इसमें मेजर क्या रहता था? Never. Controversy से भरे हुए रहते हैं ये, right? Another controversial guy. They are like famous, right? Verified accounts हैं इनके, हमारे नहीं है जो कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं. So how many of you have people seen this video? I'm going to show it to you and then we'll come back to the slides. I hope you guys are getting a lot of good content. इस वीडियो के आसपास काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. Just a sec. Just check out this video, guys. ये वीडियो सर्फ एक्सेल ने कैंपेन चलाया था #RamLaiSang. इस वीडियो के ऊपर इतनी ट्विटर पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि a lot of people and a lot of organization or let's say people started saying this ad promotes love jihad, a Hindu ladki with a Muslim guy and so on. I believe that it was a wonderful piece of ad. It's just that emotions are being displayed. अपना अपना नजरिया है देखने का. So I want you to look at this ad, and this ad got famous, and I'm going to share one amazing insight before running this ad, though I share it at the end. इस ad की controversy होने के बाद सर्फ एक्सेल का sales 10 to 15% बढ़ गया, increase हो गया, just because it went through this online controversy. Brand recall हुआ ना, सबको पता पड़ने लग गया है सर्फ एक्सेल का कुछ चल रहा है. हालांकि हैशटैग चलने लग गया बॉयकॉट सर्फ एक्सेल, फिर भी 10-15% रेज हुआ उसका सेल्स. So let's have a look at the video. देख के दिखाना बस घर से निकलो खेलो यारा इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग. अब तो मार लो ना. खत्म, बाहर आ जा, सब खत्म हो गया. मैं तुझ में तू मुझ में, अपनी दोनों की एक ही दास्तां. अपनों के संग रंग लाए संग. नमाज पढ़कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा. अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं. How many of you have seen a lot of daag achhe hain ads since childhood? I think most of us, right? But if you just go to the comments or just search for Surf Excel ad controversy, I think your perceptions are like totally different. Okay, Abhishek, I'm gonna skip that for you. So ultimately, my say here is, guys, put emotions in your content. Even if you're a part of controversy or negative publicity, remember, negative publicity is also publicity. Don't you remember Padmavat movie or Padmavati / Padmavat, or let's say that. So kya tha? Controversy thi, right? That is all. That is all you need. So why one should care about social media? Check out the brands like Swiggy, Fevicol. This ad, they actually came up with AI कि आप दूसरों की ad scan करो हमारे competitors की, और आपको हमारा एक फ्री वूपर, जो हमारा बर्गर है, जैसे मैकडी का होता है मैक आलू टिक्की, वैसे ही बर्गर किंग का होता है वूपर, वो फ्री मिलेगा. आप किसी भी कॉम्पिटिटर का कोई भी पैम्पलेट एड स्क्रॉल करो. You can get jobs on social media. You can hire people on social media. You can learn new stuff from Pinterest, SlideShare, blogs, YouTube videos, and of course get digital with my social media. I share a lot of valuable content there.
You can get famous on TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, and LinkedIn. What not? You can build a lot of good communities like groups on Facebook, lists on Twitter, pages on Instagram, boards on Pinterest, blogs, YouTube channel. You can build a good community there. Just like, Carrie Minati has built a huge community out of his own sarcastic and, foul language and creativity content. He just plays games most of the time and roasts people. Community boss. A lot of huge community supports him. So all you need to do if you want to evolve quickly is stay with the trend, stay with the algorithm changes, and stick to the originality. Never duplicate the content. Okay, you can earn a lot of money via blogs, videos, memes, content consulting, and many more, like organizing events, online and offline webinars, and so on. Now, I think I have 40 more slides, so let me check which one is pretty much good to share. Then we can have a lot of questions. I'm going to skip my video here as well. I'm going to switch to some do's and don'ts so that it will be like much more valuable for you. Number one, don'ts. So we are on do's and don'ts. Never buy followers. They are fake. They are irrelevant. वो किसी के सगे नहीं होते. They will drop off and they didn't follow you for your content. They followed you through some third party app. So वो आपके content को कभी like भी नहीं करेंगे. Contextual content is very important. What does this mean? कि मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ. अभी आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ समझ रहे हो कि मैं मेरे सोशल मीडिया स्टार्टअप को कैसे मैनेज करूँ, और अभी मैं उठा के मेरे इस कोड की बात करने लग जाऊँ या इस मैकबुक की बात करने लग जाऊँ या मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इधर फोन पे उसकी बात करने लग जाऊँ. I think that is totally non-contextual. अगर if I'll stick to the content that is contextual to the people who are watching me right now on Facebook and Zoom, I think then only it will make sense, right? So analyze the audience and prepare the content strategy. So इधर Zoom call पे आने से पहले जो आयुष हैं, my friend and the person who is taking care of my contact here, I asked him कि audience कौन-कौन है. Then I created my content or curated my content according to that. So he again updated me कि ASEC से भी काफी लोग आने वाले हैं, so prepare your content accordingly and so on. So guys, try and understand. Content audience के हिसाब से बनता है. मेरे हिसाब से नहीं बनाए content, आपके हिसाब से बनाए. Accept the feedback, optimize your strategy in real time and so on. जैसे मैंने अभी कुछ slides skip करी, I optimize my strategy because this content is much more important since we have less time left. So before sharing any piece of content, always verify. Because मेरे साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हो चुका है. मेरी बिल्डिंग में किसी ने एक ऑडियो मैसेज चलाया था कि मेरी डॉटर में मुझे किडनैप करने का अटेम्प्ट हुआ है. मैंने वो उनका ऑडियो मैसेज उठा के कम से कम 2,500 लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया था. Because I trusted that person, usually, just like it happens, it's just like your acquaintance, right? You know that person since years. और उसमें से मैंने 5 जर्नलिस्ट को भी फॉरवर्ड कर दिया था, जिसमें से 2 जर्नलिस्ट ने इवनिंग न्यूज़पेपर में प्रिंट भी कर दिया. Then police find out watching all the cameras that it was a fake news. She was just trying to gain attention because she sings and she wanted to gain some attention. लेकिन इसमें बुली कौन हुआ? मैं, क्योंकि मेरे जर्नलिस्ट कॉन्टैक्ट्स और मेरे कॉन्टैक्ट्स को जब तक मैं नेक्स्ट content forward कर रहा था, they were saying, are you sure this is not fake? I think journalist said, Mayank, we have put you in yellow list and we won't be accepting your content for the next some time. So you see, it hampers your brand value if you are promoting fake news, right? जैसे कोरोना के बारे में काफी फेक न्यूज़ आ रही थी, लॉकडाउन के बारे में काफी फेक न्यूज़ आ रही थी. So be careful with that piece of content that you share. कॉपी करने से एग्जाम में पास नहीं हो सकते. एग्जाम में पास हो सकते हो, सोशल मीडिया पे नहीं. सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम है. अगर आप मेरा फोटो भी यूज करेंगे तो मुझे फेसबुक पे आ जाएगा कि दिस पर्सन हैज अपलोडेड योर फोटो, डू यू वांट टू टैग योरसेल्फ. आप कंटेंट मेरा कॉपी करो, ब्लॉग कॉपी करो, मैं स्कैन करूंगा मेरा कंटेंट एक टूल पे जाके, स्मॉल एसईओ टूल्स के प्लेजरिज्म चेकर पे, आई एम गोना शो इट टू यू. सिंपली मुझे पता पड़ जाएगा कौन मेरा कंटेंट कॉपी करके बैठा है. ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल नो जय शेट्टी? एनीबॉडी इन द रूम हु नो जय शेट्टी? रिप्लाई इन द चैट सेक्शन. यस, yes. लोगों ने जय शेट्टी को नहीं बख्शा for copying the content. हम क्या चीज हैं? I'm gonna show you a glimpse of a video because it is 8.5 minutes video. I'm gonna show you for 20 seconds or 30 seconds from the center. एक foreigner बंदी है जिसने जय शेट्टी. We gotta realize that there's a difference between talking shit about people and talking truth about shitty people. That is not my quote, but whoever wrote it. A ton of my 20s embedded on disability, spiritual. So I'm showing this video because she exposed Jay Shetty videos में regular quotations कोई बहुत अच्छे form में बोल के videos बनाता है. Just check it out. Every kind of if you paid interest in like 2010.
ये जो कंटेंट डाला जय शेट्टी ने, इसने बोला कि ये Pinterest पे ऑलरेडी नवंबर 16 2010 को था सेम कंटेंट, और इसने पूरे वीडियो में कम से कम ऐसे 50 to 100 सिनेरियोज बताए, वीडियो क्लिप्स बताई हैं. I think she spent almost 3 to 4 months building this one video, right? So इस कंटेंट को उसको बहुत ज्यादा virality भी मिली, Facebook पे भी बहुत फेम मिला, and now she has almost a verified handle with 4,39,000 subscribers, and Abror exposed on the biggest fraud in online history. She keeps on exposing a lot of people, so she's working really hard. Her research game is totally strong, right? So yeah, I'm gonna do that with she, don't worry. Okay, let me show you one amazing tool here. I'm gonna skip this tool, small issue tool / plagiarism checker or plagiarism checker. Whatever content you have in your hand, for an example, मैं नील पाटिल का blog खोलता हूँ. I hope you guys can see my browser right now. I have shared my browser. I'm on Neil Patil's blog right now. I'm just starting to copy. For an example, मैंने नील पाटिल या विकीपीडिया या किसी भी blog से एक piece of content उठाया, कॉपी किया और मेरे ब्लॉग पे पेस्ट किया, या मैंने क्लाइंट को सबमिट किया. नाउ यू आर माय क्लाइंट एंड यू वांट टू चेक, you go to this tool, plagiarism checker. I'm going to share this tool link with you in one shot. I'm going to paste this content here, or maybe the URL of that content or file, and click on check plagiarism. Plagiarism means duplicacy, and duplicacy is prohibited on Google, Facebook and everywhere on World Wide Web. Do not duplicate the content. कुछ कंट्रीज में तो इतना बड़ा क्राइम है कि किडनैपिंग और मर्डर जैसा गिना जाता है. आपको जेल भी हो सकती है और 1000 और काफी $1000 का फाइन भी लग सकता है. सिंगापुर, यूएस, कैन यू सी इट्स लाइक प्लेजरिज्म 57%, इतना सा कंटेंट. इफ आई क्लिक ऑन कंपेयर, मुझे वो नील पाटिल की लिंक दिख जाएगी जहां पे प्लेजरेटेड है, जहां से कॉपीड है. ऑलराइट, so that is how you can check if your content writer is submitting a content to you, if you have written a piece of content, if it is not already there on World Wide Web, because then there are like 7 to 8 million blogs being written every day, maybe more than that. So you can check this. I'm going to share one link with you guys जो मेरी tool book मैंने बनाई है. I usually sell it, but I'm going to give it away for free. So be here. There it is. You can go to this link. I'm going to copy and paste with you guys in the all chat. Just go there. वहाँ पे एक नीचे document दिखेगा मेरी website पे. Just download it. Already coupon code लगा हुआ है, so you don't need to buy it or pay any money out of it. Just go to this page. Do it later on once we have completed with the slide. So I'm going to just cover this last slide and ask the questions, and then just cover one more slide in the last thank you slide. A lot of people ask, मैं मेरा budget कैसे designate करूँ? So there I have created a 5, 15 and 80 formula where you can allocate your budget accordingly. So what you need to do is, for an example, I gave you $100. All you need to do is spend 5 rupees on 3 ads for the first 3 months. That will be like 15 rupees spent. उन 3 महीनों में जो डेटा आएगा आपके पास, हर महीने आपको सिर्फ 5% अमाउंट खर्चा करना है. 15% या 20% अमाउंट के अंदाजन खर्चा हो जाएगा आपका. उन 3 महीने का जो डेटा आएगा, मैंने आपको 100 रुपए पर एनम बजट दिया है, अज्यूमिंग दैट. उन 3 महीने का जो डेटा आएगा, मैं उसको गैदर करूंगा, अपना IQ मिलाऊंगा. डेटा प्लस माई IQ इज इक्वल टू अमेजिंग डिसीजन मेकिंग. वो डिसीजन में डालूंगा मेरे 80% बजट के ऊपर कि इस ऑडियंस को ये कंटेंट पीस पसंद आया है, मैं ये ज्यादा सेल कर सकता हूँ, इसको मैं कम बजट में ज्यादा सेल कर सकता हूँ, ये वाली एड में ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, एंड सो ऑन. If you have not got the results until 3 months, do it for 6 months, do it for 9 months, and then increase your budget over a period of time if you have that kind of good response. So I believe that this formula has worked for me. This formula can work for you very well. All right, now I'm gonna just jump to these things because Smashable बहुत लोगों ने सुना होगा. उनके CEO हैं पीट कैशमोर. उनका स्टेटमेंट है privacy is dead and social media holds the smoking gun. यानी सोशल मीडिया ने सब कुछ ओपन करके रखा है. There is nothing hidden from social media or Google or anybody. अगर मैं आपके साथ एक रूम में बैठा हूँ या कॉफी डेट पे हूँ या मे बी कॉफी मीटिंग पे हूँ ओवर अ कॉफी, तो गूगल नोज कि ये स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन के साथ इतने बजे से इतने बजे तक था. सो आई बिलीव दैट उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन और किसी के पास नहीं है. हमारे वाइफ के पास नहीं है, हमारे मॉम डैड के पास नहीं है. हमको खुद को नहीं पता है कि हमको गूगल कैसा देखता है. सो अगेन आई कैन गिव यू अ लिंक वेयर यू कैन सी योर ईमेल आईडीज persona, how Google looks at you. It is called ad settings about from Google. Yeah,
go into this link, log in from your email ID. I've shared it in the all chat. ये बताएगा कि Google आपको कैसे देखता है, आपको interest, behavior, age, gender सब बताएगा आपके बारे में. And there is one statement from my side: be the real you and let the digital do the remaining part. So I believe that looking at the time, that's all for today's presentation. Feel free to ask for more and more questions. I have rushed a bit, skipped a few slides because मेरे पास almost 5,000 slides भी हैं. मैंने almost 60-70 slides cover करी हैं. I just skipped 15-20 slides. But anyway, I've shared more and more valuable content, keeping the timeline in mind, and I've tried to give the maximum value and output. So feel free to ask your question, guys. I'm done with it. Let me know whatever questions you have. A lot of people have been into digital marketing these days. Should I get into it now? Shreyash, it's now or never. Please get it, okay? Please send the links. I've sent the links in the all chat. Can you just check it, my dear friend? Priya Dosi, can you just check the all chat? I've shared it again. Okay, please send feedback link. I don't have a feedback link, sorry. Anybody from the team would like to share? I try to show YouTube videos via Zoom, but the voice doesn't go. I have a paid account and you just did it. How? Okay, Deepak. It's like I'm using MacBook. I played a video. I'm going to show you my Zoom settings if you want. That's all I can show it to you. The preferences of Zoom settings. It's basically my speaker and mic is open. I don't use headphones here. So आप जब YouTube videos चलाते हैं तो keep your speaker on or keep the output same as input. Only then it will be like, you'll be able to do it. Okay, so I'm gonna stop share here so that we can communicate. Guys, any more questions, any more queries? Ronald sir, would you like to take over and ask questions from people? And yeah, so few questions on few questions on Q&A. This thing. If a website has a 150 page and we want to know which are there for top 10 most viewed page, is there any tool available? I mean, I believe he's asking, Sumit Mahindra is asking, the website has 150 page. So which page has been viewed more? So that's what I believe we want to analyze. And is there any tool available for that? I'm going to share it right away. How do you go ahead? Go to Google Analytics. Number one, you must have installed Google Analytics. Otherwise, you won't be able to do that. It tracks the traffic from the moment you have. So I hope, Sumit, you have that Google Analytics installed. Go to the behavior section and go to the site content and all pages section. I'm going to show it to you right away how to do that in a very simple manner. Okay, मैं Google Analytics पे हूँ. I'm going to open a dummy account here, Google Merchandise Store का. I'm going to go to behavior section here. I clicked on behavior. I'm going to click on site content and I'm going to click on all pages. और मैं Sumit, मैं एक timeline select कर लूँगा. 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, जो भी मुझे चाहिए, उस stipulated period of time में कितना traffic आया है, and then I'll be able to check it out. For an example, ये मैंने पूरे May month का select कर लिया. I can see which page had the maximum views from here. Can you see that? It's home page, then store page, then quick view, then basket, and so on. So Sumit, I think that was quite suffice to your answer. I think you can find that through this. Okay. So he's asking on his website, not on the Facebook page. He's asking about his website. If his website has multiple pages, is there any tool available where he can check Is your website WordPress based? You need a plugin of Google Analytics. Otherwise, you won't be able to do that. And I believe that is a paid service. No, that's free. You just need to connect with Google Analytics with your account. 10 GB तक का data is totally free. मैंने maximum tools जो मैंने मेरी resource file में दिए हैं, they're 90% free tools, and you can use. There are various options of the tools. You can use free wala tools and get it sorted. So one more question was coming again and again, whether somebody should be doing digital marketing on his own, or he should hire somebody. What would be your suggestion? So you see, it's all about, if you can do it right, do it for yourself, hire a team under you. But if it is not a game that you can play, don't waste your time, because it's like आपके लिए फिर वो हो जाएगा कि minimum paid wage वाला काम कर रहे हो. Be the Michael Jordan of your niche. अगर आप Michael Jordan हो वीडियो बनाने में या clients लाने में या sales करने में, don't try to become the Michael Jordan in digital marketing. Hire a Michael Jordan of that. So that is all I can say.
don't be the minimum page worker of digital marketing if you don't know how to do it or if you're not interested in that. So if you're Michael Jordan in sales, work on that. Hire a marketeer Michael Jordan. That's it. Sumi, I think if you want to track, not on our website, rather someone else. Okay, if you want to track somebody else's, there are websites like comscore.com. You cannot just come out with a page कि सबसे ज़्यादा traffic उसके पास कौन से page पे जा रहा है, but you can do a lot of competitor analysis, Sumit, via semrush.com and platforms like semrush.com. Okay, so Sunil is asking, I believe he is associated with an educational institute. So which platform is right for him? Which digital marketing platform is right for him? Let me read out his question. What do you think is the ideal digital marketing platform for an educational institution? Could you please explain? Why not YouTube, IGTV? You can start posting a lot of video. Instagram, Snapchat, because आपकी target audience वहाँ है. Plus a bit Facebook is compulsory because Facebook और Instagram ads go hand in hand. और आपकी paying audience would be parents, तो आपको parents को Facebook पे target करना ही पड़ेगा. और students को target करने के लिए Instagram, Snapchat, YouTube and maybe TikTok ads. So if you have that kind of budget. Otherwise, YouTube and IGTV, Instagram and Snapchat organic posting will do wonders for you. You just need to post valuable content, edited, good, optimized content and share it with your audience. Ask your students to share it on their stories. Ask your students to share it on their WhatsApp groups. बहुत ज़्यादा spread और easily traction मिलेगा सुनील. Okay. Great. Any more question? How to decide the best number? Number for what, Akash? How to decide the best hashtag? Let's talk about Instagram, Akash. अगर hashtag research करना है तो there is a tool known as hashtagify. हालांकि मैंने उसमें दिया है hashtagify.me. Then there is a tool keywordtool.io. मैं दो tools share कर रहा हूँ आकाश, hashtagify.me and keywordtool.io. पहले यहाँ पे research करो. Then go to Instagram and never use hashtags that have millions of posts. Go for medium and average, like 3-4 lakh posts हो, कुछ thousands posts हो, average. उन hashtags की surrounding hashtag वैसे use करो जिसके average posts हो. Don't go for millions of posts क्योंकि वहाँ पे तो your post will get lost. Rest are, I believe, mostly common questions. From where I can learn about digital marketing? Anand has been asking this question. Okay, so Anand, I'm so sorry. I wanted to address that earlier. So even I train a lot of people online and offline. Either you can come down to Indore or join my online program. If not, YouTube and Google, make YouTube your mommy and Google your daddy. बहुत ज़्यादा content available. You just need to be dedicated. अगर mentor चाहिए, तो I'm always there. You can search for many more mentors online as well. कोई और course join कर सकते हो. For an example, Bhatnagar Brothers का बहुत अच्छा course है. Even I provide a 25 days training, so there is no biasness. You can simply go for any of the courses and you can be a part of them. I'm gonna share my links again. Sorry, hashtagify, keywordtool.io. Then I'm gonna share. I think किसी को private chat में चली गई है links, so I'm gonna share those links again. This is like how Google looks at you. This is that ad setting. Can you see in the all chat now? The document link. Okay. I'm gonna share. You are sending it to all the panelists. You will have to change it to all panelists and attendees. I'm so sorry. Again, I'm just gonna change that. So sorry about that, guys. I'm so sorry. My bad. There you go. I hope that suffices your question. Just connect with me on my social media. I'll give you more details, Anand. Don't worry about it. So Mayank, I believe we only have 2 minutes left, so we'll have to wind up. So thanks a lot, everybody, for joining. Thanks a lot, Mayank. It was really insightful. I mean, I don't know about others. I have learned a lot. Glad to know, Honor. So thanks a lot, everybody, and thanks for joining. We'll be sharing the presentation which Mayank has shared with us with all the attendees of this webinar. So rest assured, you'll be getting this presentation on the mail. So thanks a lot, everybody, and hope to see you again. Thank you.
Glad to be a part of it. Thank you very much for having me. Have a great time, guys. Stay safe. See you soon. Thank you. Okay, bye. Bye-bye.